नमस्कार। पाकिस्तान कुत्ते की उस टेढ़ी दुम की तरह हो गया है जिसे जितना भी सीधा करने की कोशिश करो होता ही नहीं। लेकिन इस बार यूएन की बैठक में उसे मुंह की खानी पड़ी है, जिसके बाद पाकिस्तान को फिर से प्रोपेगेंडा का सहारा लेना पड़ रहा है। यूएन में कल बुलाई गई बैठक एक अनौपचारिक बैठक थी जिसको कभी भी रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा। लेकिन इस बैठक में भी यूएन के कई देशों ने मान लिया कि कश्मीर का मामला एक द्विपक्षीय मामला है, मतलब दो पार्टियों के बीच का मामला, अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है। पाकिस्तान ने दावा किया कि कश्मीर का मामला अंतर्राष्ट्रीय मामला है। चीन ने लद्दाख को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन इस बैठक में चीन को छोड़कर सभी देशों ने भारत का साथ दिया और भारत सभी देशों को यह समझाने में कामयाब हुआ कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और संयुक्त राष्ट्र के देश को यह बताने में भी कामयाब रहा कि उसने ना तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ना ही शिमला समझौते का उल्लंघन किया है। बैठक के बाद चीन और फिर पाकिस्तान के राजदूत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करने आए, लेकिन पत्रकारों के एक भी सवाल लिए बगैर ही वो वापस चले गए। जबकि दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने गए सैयद अकबरुद्दीन ने 7 सवालों के जवाब दिए और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से शुरुआत के 3 सवाल सिर्फ पाकिस्तानी पत्रकारों के थे। अब हम आपको एक एक करके पाकिस्तानी पत्रकारों के सवाल सुनाएंगे और आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तानी पत्रकारों को शर्म से पानी पानी कर दिया। पहले पाकिस्तानी पत्रकार का सवाल था कि कश्मीर को लेकर भारत ने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन और इसके अलावा जो शिमला समझौता है उसका उल्लंघन किया है। इस पर क्या जवाब था सैयद अकबरुद्दीन का, सुनिए। I will start with you and I will answer 5 questions, which is 5 times more than both my predecessors who came here answered. Let's start you, since you are so excited. No, I'm not excited. The only thing is the history is excited. There has been resolution on that disputed territory of Kashmir and Article 370, fine. That could be an internal matter of you. Thank you for accepting that. No. Thank you for accepting that. That All could right, be an sir. instrument. All right. Thank you. So Article 370 was enshrined in the In Indian where? Constitution. Thank you. By India. Right, but the thing is, still the reality remains that how do you deal with the UN Security Council resolutions passed in 1947, 50, and then Shimla Agreement has also failed in bilateralism. Thank you. Thank you. I understand your point. Your point is how do we address this issue? The history is well known. I don't need to go back. Let us look at the last agreement that India and Pakistan signed. And that goes back to 1972. We are committed to that, and we hope Pakistan too is, to try to address these issues in the manner that they have signed on to in a legally binding agreement, and we stand ready to address them in that context. We can go back in history, but every new agreement overtakes the past. So you are very well versed, my friend. Please appreciate that I started by saying we are committed to that agreement, and we hope Pakistan too is. Because if that is so, its action don't seem to be working out with what is in that agreement. दूसरे पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बिना किसी बातचीत के कश्मीर के मुद्दे को हवा क्यों दे दी? इंडिया पाकिस्तान के साथ कब बैठने जा रहा है? इस पर अकबरुद्दीन का क्या जवाब था, वो सुनिए। Ambassador, the fact remains, while you have said all these things that you're willing to talk and you're ready to talk, but what has happened? The fact remains, India has steadfastly refused to have any meeting with Pakistan for one reason or another. It has been almost time immemorial. When are you going to sit down with Pakistan and have a meeting? Because, you know, and that's the reality. Thank you. Without Can the I meeting, answer? Yes, sir. Can I Okay. answer the question? Let's be specific about questions. If your question is whether India and Pakistan have talked, let me tell you, I have been a member of many delegations to Islamabad. You're aware of that. I myself served as an Indian diplomat in Islamabad. So please understand, there are normal diplomatic ways of dealing with countries when countries deal with each other. That's the way to do it. But using terror to try and push your goals
is not the way that normal states behave in. No democracy will acknowledge or accept talks when terror thrives. Stop terror to start talks. तीसरे पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप पाकिस्तान के साथ बातचीत कब शुरू करेंगे। इस सवाल के जवाब में भारतीय राजनयिक फौरन ही अपनी जगह से हिले और पाकिस्तानी पत्रकार के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता हूं और चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या जवाब था और किस स्टाइल में सैयद अकबरुद्दीन ने जवाब दिया है पाकिस्तानी पत्रकार का, वो देखिए। Yes, sir. You wanted me? And so that you will not have any doubts that I've answered 3 Pakistani questions. Third. Yes. When will you begin a dialogue with Pakistan? So let me begin by coming across to you and shaking your hand. Yes, sir. All 3 of you. So let me tell you, we've already extended our hand of friendship by saying we are committed to similar agreement. Let us wait for a response on that from the Pakistani side. तो देखा आपने, अकबरुद्दीन की हाजिर जवाबी ने कैसे पाकिस्तानी पत्रकारों की बोलती बंद कर दी थी। बिल्कुल संयमित रहते हुए उन्होंने यूएन में भी भारत की बात रख दी और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के सामने भी, साथ ही साथ पाकिस्तान को आईना भी दिखा दिया। अब बारी थी इंग्लिश जर्नलिस्ट के सवाल का जवाब देने की। इंग्लिश जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आप पाकिस्तान के उस रुख पर क्या कहना चाहेंगे जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आने के बाद इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय मामला बता दिया है। इस पर भारतीय राजनयिक ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। Yes, ma'am. Question for you. How do you respond to Pakistan's assertion that the very fact that we're having a meeting here at the Security Council means this is no longer a bilateral issue? This has been internationalized. Ma'am, you've been covering the Security Council. You are aware that in close consultations, anyone, especially parties to the dispute, can try and throw in anything for the consideration of the members of the Security Council. That's the nature of the beast. However, you have seen what's the outcome of that meeting. There is, I don't want to add further, I've repeatedly said, we are ready to address these issues in a manner that states who have normal approaches to international ties should address them. And in our case, we are committed to the similar agreement. It's now for Pakistan to make that commitment to stop terror, to start talks. मतलब दुनिया के मंच पर भारत का रुख साफ था, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और हमेशा रहेगा। सैयद अकबरुद्दीन ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का सवाल तब तक नहीं उठता जब तक वो आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद नहीं कर देता। उन्होंने दुनिया को भरोसा दिलाया कि 11 दिनों में जम्मू कश्मीर में कोई भी कैजुअलिटीज नहीं हुई है। कुछ दिनों में सरकार कश्मीर में हालात और बेहतर कर देगी। Yes, ma'am. Anyone else, ladies? Yes. Yoshita. Thank you, Ambassador. After 4 questions, so that nobody thinks that I am being biased towards you. Yes, ma'am. Just before the meeting, Russia said that it favors a bilateral track between India and Pakistan on Kashmir. That's again a viewpoint of many other countries here at the UN. So again, in a way that Pakistan said that it's internationalizing the issue, but with other countries not in favor of that, how do you see this, given the fact that other countries are saying it's a bilateral issue? I do not, like my predecessors, take on the responsibility of speaking for the Council. The Council has spoken. It's pretty clear. All of you are aware of what outcomes are there. I will not comment on it. Let me tell you, India's commitment to address these issues on the bilateral track has very broad acceptance globally. Anyone else? Yes, just one minute. Thank yes. you, Ambassador. Yes. You, You always had a complaint that I never spoke with you. Yes. I'm ready now. Yeah. And this is the 5th, but I will give you one 6th. Mr. And that's the Ambassador, end. you spoke about normalization and removing the restrictions in Kashmir. So are you here admitting that there is something wrong that happened? One second. One question at a time. I never answer more than one. How India is going to address the will of the Kashmiri people? True. Thank you. So let me tell you, there is something called prevention is better than cure. The measures that we took were preventive in nature.
They were designed to stop terrorists from bleeding our people. You've noticed that in the 10 days that have passed, there are no casualties. There are no fatalities. That's because every effort was made to work to ensure that our people in Jammu and Kashmir are not adversely affected in terms of their lives. Yes, there's always a difficulty that sometimes these will lead to restrictions. We acknowledge that. We are an open society. We acknowledge that.